Assalamualaikum. My name is Amin Yasmin. I am from BE MTS 5B, and today we are going to present our lab task of microcontrollers and embedded systems. First of all, this is lab 1, and this is an introductory lab, basically introduction of different softwares and all that. We have 3 lab tasks in it. We have to compile code on HTML in 2 languages, in assembly language and in C code. First of all, we have to create new project, and this assembly language, so we have to execute it in assembly or C. But we have to select assembly for new project, and our third task is to compile code in Arduino IDE. Here we have to select microcontroller for our lab task, and we are selecting 328P microcontroller. After that we have this code in assembly language, और अब हम इस कोड को बिल्ड करेंगे और बिल्ड सोल्यूशन और डिबगिंग स्टार्ट कर देंगे. लेकिन डिबगिंग करने के लिए हमें पहले स्टिमुलेटर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो वी हैव टू सिलेक्ट स्टिमुलेटर फ्रॉम हियर, और उसके बाद हम इसको अगेन जो है डिबग वाले उसमें ले जाएंगे. डिबग सेइंगली डिबग हो रहा है, और इसकी डिबग में विंडो में जाके इनपुट एंड आउटपुट, एंड यू आर सीइंग दिस कि डिबग हो रहा है. और ये इसकी कुछ सिलेक्शन है, हमें इसमें बिट्स वगैरह सिलेक्ट करनी है अपनी मर्जी से, वो हमने किया. रजिस्टर है. उसके बाद हम इसके प्रोटेस्ट स्टिमुलेशन पे आ गए. प्रोटेस्ट स्टिमुलेशन में हमने क्या करना है कि हमने जो है ना सिर्फ एलईडी ब्लिंक करवानी थी, जो कि हमारी एलईडी ब्लिंक हो रही है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी ब्लिंक हो रही है. अब हम आएंगे लैब 3 पे. लैब 2 के टास्क 1 पे, लैब 2 के टास्क 1 में हमने करना क्या है कि R16 में हमने वैल्यू स्टोर करवानी है. R16 में हमने कोई बाइनरी वैल्यू स्टोर करवानी है, और उसको और R17 पे भी वैल्यू लोड करनी है. और इन दो वैल्यूज को R17 में इन दो वैल्यूज को ऐड करके हमने R16 में दोबारा से स्टोर कर देना है जो वैल्यूज ऐड होगी. उसके लिए कोड है, लैब 2 के टास्क 1 का कोड है. इसमें प्रोटेस्ट स्टिमुलेशन नहीं है. अब हमारे पास लैब 2 का टास्क 2 आ गया है. इसमें हमने करना क्या है कि किसी एक पोर्ट पे हमने इनपुट लेनी है, जो कि हमने R17 इनपुट ली है पोर्ट बी पे, और हमने आउटपुट लेनी है किसी और पोर्ट पे, मतलब इनपुट देनी है किसी एक पोर्ट पे, वो हमें आउटपुट किसी और पोर्ट पे, जो कि हमें पोर्ट डी पे हमें आउटपुट शो करवाना है. और इसके लिए हमारे पास जो है प्रोटेस्ट स्टिमुलेशन जो है वो भी आप देख सकते हैं. प्रोटेस्ट स्टिमुलेशन हमारे पास आगे हम एक पोर्ट पे जो है इनपुट दे रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग आउटपुट on another port. Okay, now we have lab 2 task 3, और this is task for charging and discharging of resistors. इसमें हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की मेथड यूज करें. ये हमारे पास R16 एक रजिस्टर है, इसमें हमने डिले भी लगाया हुआ है, और NOP का यहाँ पे कोई खास वो नहीं है. ये हम यूज कर रहे हैं सिर्फ डिले डालने के लिए. तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज गोइंग ऑन इन दिस. आफ्टर दैट हमारे पास प्रोटेस्ट स्टिमुलेशन है इसकी, एंड वेट अ मिनट, सॉरी. प्रोटेस्ट स्टिमुलेशन में भी हमारे पास यू आर सीइंग कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज शोइंग इन प्रोटेस्ट. उसके बाद हमारे पास वेट फॉर अ व्हाइल. उसके बाद हमारे पास लैब 2 का टास्क 4 आ जाता है.
इसमें हमने यूँ करना है, जब दो वैल्यूज़ हमने दो रजिस्टर्स को वैल्यूज़ दी हैं और जब वो वैल्यूज़ इक्वल हो जाती हैं तो दैट शुड जंप इनटू अनदर रजिस्टर। इसमें हमने बिट्स भी टोगल करनी है। इसमें होगा ये कि R16 से वैल्यू कॉपी होगी, कॉपी पेस्ट करनी है हमने, वैल्यू R16 से वैल्यू कॉपी करनी है एंड दैट इज गिवन टू R। आफ्टर दैट R16 से वैल्यू हमने कॉपी करनी है, दैट इज गिवन टू R17। दैट वैल्यू इज गिवन टू द रजिस्टर R17। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास इसका जो है प्रोग्रेस नहीं, इसका हमारे पास टास्क 5 आ जाएगा। लैब 2 का टास्क 5 हमारे पास आ गया है। लैब 2 का टास्क 5 का कोड इज हेयर इन एटमल। डिक्रीमेंट वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट किया, वैल्यू को कॉपी किया, R16 की वैल्यू को कॉपी किया, स्टोर कर दिया हमने R17 में, और इसका मतलब है कि R16 R17 के इक्वल हो गया है। R16 R17 के इक्वल हो गया है। लैब 5 टास्क का एटमल कोड इज है एंड वी हैव कॉन्फ़िगर किए हैं हमने पिन्स R16 के लिए, और R16 को हमने एज अ आउटपुट यूज़ किया है पोर्ट C पे। उसके बाद हमारे पास इसका प्रोटियस है, यू कैन सी प्रोटियस है, जो हमने जो है वैल्यूज शो करवानी है इन LCD। ऑन LCD हमने LCD ने 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हमने इनकी वैल्यूज शो करवानी है। तो these values are showing clearly by using column and rows like matrices. Okay, now we have lab 3. Value display on hex key by changing bits on column. हम इसकी bits change कर रहे हैं on column, तो these values are changing and it is somehow like matrices. तो as we are changing bits of columns, the value is changed, and if we press 5 we get 5 on 7 segment display. If we press any number we get that number on display. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लैब आ गया, लैब 4। ये 2 tasks of lab 4 are done in one Proteus. This is about shift cursor. 2 types of cursors are here. We have position shift and space shift. So here we have to change hex value to change the shift. Now this is lab 4 Proteus stimulation. If we press any value on hex keypad, we can get that display on LCD. After that, we are here with lab 5. Lab 5
we have to show value on LCD and we have to show value on counter also. You can see the counter is placed here और हमने LCD पे values show करवानी है. After that we have lab 6. This is master slave connection. Hex keypad value on LCD. We have to show hex keypad value on LCD and we are using master slave connection here in lab 6. After lab 6 we are going to lab 7. This is the code. We have to display text on LCD by calling interrupts. We are using interrupts in lab 7 and we have to display on LCD. Here is very basic, so we are displaying hello initially and then we have to display push button. If we push the button after the hello and it can display that. Here is the code. You can see that in this code. Here we are calling ICR and using external interrupt as an argument. Here we are giving delay in ISR. So after that we have Proteus stimulation. We have to go to Proteus stimulation for lab 7. It's taking a while. So we have Proteus stimulation of lab 7. Here this is the Proteus LED is blinking here and the Proteus stimulation is done. After that we are here in lab 9. Here's a photo of lab 9. Lab 9 is actually about duty cycle. We have to display LED on and off LED, and first LED goes from 0 to 100% gradually. Its brightness get high. फर्स्ट इसकी ब्राइटनेस जो है ज़्यादा होगी और 0 से 100 तक जाएगी. उसके बाद इसकी ब्राइटनेस जो है कम होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम 100 to 0. सो वी आर यूजिंग ड्यूटी साइकिल इन लैब 9 and you are seeing the code here. We are also placing display of 10 milliseconds in every step and duty cycle is working as like this. And this is the LED and duty cycle is working here in LED. You can see this. Thank you so much for watching video. Allah Hafiz.